বিগ পলিটিকেল আপডেট আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব। দেশত আহি আছে ভয়ংকৰ আৰ্থিক চুনামি। এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। এনেকুৱা সংকট আহিব দেশৰ জনতাই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিল বা দেখা নাছিলে। দেশত এতিয়া আৰ্থিক চুনামি হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব মোদীৰ। ৰাহুল গান্ধীয়ে ফাদিল কৰিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য, এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিব চেষ্টা কৰিছে। দেশত আহি আছে ভয়ংকৰ আৰ্থিক চুনামি। জনতাৰ ভয়ত ভিতৰি কঁপিছে বিজেপিৰ সমগ্ৰ চিষ্টেম কঁপিছে বুলি কৈছে, মন্তব্য কৰিছে, বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশত এনেকুৱা আৰ্থিক সংকট আহিব জনতাই কেতিয়াও দেখা নাই বা কেতিয়াও ভবাই নাছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্থিক সমস্যা আহিব পাৰে। যি চিষ্টেমক মোদীয়ে কণ্ট্ৰল কৰিছিল, সেই চিষ্টেমে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীক তথ্য দিছে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ, বিজেপি মন্ত্ৰী এতিয়া সকলোৰে কলা অধ্যয়ৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। এবছৰৰ ভিতৰত মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী প্ৰেৰণ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা চিষ্টেমক লৈ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ বুলি যাক কোৱা হয় ৰাহুল গান্ধীয়ে ফাদিল কৰিলে ভয়ংকৰ তথ্য। ৰাহুল গান্ধীৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আছে। মন্তব্য শুনাৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে। দেশত অতি ভয়ানকভাৱে আৰ্থিক চুনামি হ'বলৈ গৈ আছে। আহি আছে দেশত ভয়ংকৰ আৰ্থিক চুনামি। দেশত এনেকুৱা সংকট আহিব দেশৰ জনতাই কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা, দেখি পোৱা নাই, সেই ধৰণৰ সংকেত দেখা দিবলৈ গৈ আছে। এবাৰ জনতাৰ ভয়ত ভিতৰি কঁপিছে বিজেপিৰ চিষ্টেম কঁপি উঠিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ফাদিল কৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য। দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা চিষ্টেমক লৈ বিস্ফোৰণ ঘটাইছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে মন্তব্য কৰি কৈছে যে এবছৰৰ ভিতৰত মোদী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব। মোদী, অমিত শ্বাহ, বিজেপি মন্ত্ৰী সকলোৰে কলা অধ্যয়ৰ তথ্য আমাৰ হাতত আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লগতে কৈছে যে চিষ্টেমক মোদী কণ্ট্ৰল কৰিছিল, সেই চিষ্টেমে এতিয়া মোক তথ্য দিছে বুলি কৈছে। দেশত এনেকুৱা আৰ্থিক সংকট আহি আছে জনতাই কেতিয়াও দেখি পোৱা নাছিলে। জনতাৰ ভয়ত ভিতৰি কঁপিছে বিজেপিৰ সমগ্ৰ চিষ্টেম। আৰু এই ধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি মন্তব্য কৰিছে আমি শুনো আহক। सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।